Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. So today I'm going to teach you about relative atomic mass and give you the background of how it is determined. Okay, since we all know that the size of an atom is incredibly small, बहुत छोटा size का atom होता है. So I'll provide you the masses of a few atoms. I'll write down the values for you. Okay, first I will start with the mass of hydrogen atom. Its mass is around 1.7 into 10 raised to power minus 24 grams, and the mass of carbon atom is around 2 into 10 raised to power minus 23, and the mass of fluorine atom is 3.2 into 10 raised to power minus 23. Fine. So these are the masses. As you can see, these are very small. So it is much more useful and convenient to measure the masses relative to each other. And for relative masses, we use the mass of carbon. As you all know that the relative atomic mass of carbon is 12. You can also see from the periodic table. आप periodic table भी देख सकते हैं कि कार्बन का relative atomic mass 12 है. ये कैसे possible है? Because it has 6 neutrons and 6 protons, due to which it has a relative atomic mass of 12. If we add 6 protons and 6 neutrons, we get a relative atomic mass of 12. Right. Okay, class. As we know, electrons are very light particles and they have almost negligible weight. So if we divide an atom of carbon into 12 equal parts, so we can get 1 AMU unit. यानी कि सारे एलिमेंट्स जो हमें जिनका periodic टेबल में जो हमें मास मिलता है, आपको periodic टेबल दिखा देते हैं. ये बेसिकली 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से कंपेयर किया गया. इट इज रिलेटिव टू 1/12 पार्ट ऑफ अ कार्बन एटम. So 1 AMU is equal to, I'll write down a note for you. ये आपको पता होगा एक यूनिट AMU, atomic mass unit. It is equal to 1/12 part of carbon atom. So students, how do we get the AMU for elements? For example, I am writing an example of carbon. अब कार्बन 12 है, इसका 12 है तो इसका होगा 12 AMU. ठीक है. सो 1/12 ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? This will be equal to 1 AMU. Right. So if I write students the definition of relative atomic mass, so its definition would be the mass of an isotope of
an element compared with 1/12 part of carbon 12 is called relative isotopic mass. Fine. So for example, class we have lithium 7. लिथियम का आपको सबको पता है जैसे mass होता है लिथियम का 7. मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. ये लिथियम है. इसका relative atomic mass है 7. So ये 7 कैसे है class? Because इसका जो one atom is equal to 7 1/12 pieces of carbon atom. I'm going to write it for you. For example, lithium. It's it has 7 AMU atomic mass unit. It is equal to 7 multiplied by 1/12 parts of carbon atom. यानी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 कार्बन एटम से तो तब हमें ये मास इतना मिलता है. इतने आपके पास अगर 1/12 कार्बन के पीसेस होंगे तो तब लिथियम का इतना मास ऑब्टेन आपको होगा. Okay, class, we all know about isotopes. You might have studied in your previous classes like C1. उसमें पता होगा कि isotopes are the atoms of the same element having different neutron numbers but having same proton numbers, right? तो क्लास इस वजह से हमारे पास डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं बट periodic टेबल में आपको relative atomic जो mass मिलता है वो एवरेज मिलता है. एंड हाउ डू वी गेट इट? और उनकी abundance भी आइसोटोप्स की डिफरेंट होती है. So I'll provide you an example of fluorine. It has two isotopes, 37 and 35. और इनकी abundance भी different होती है. So by calculation, I will show you how do we get the relative atomic mass of fluorine और periodic table में हमें ये value कैसे मिलती है. मैं आपको ये proof करके दिखाऊंगा आज. Okay. First of all, I will write down the definition of isotopes. These are the atoms of the same element having different mass number slash proton numbers, sorry, neutron numbers. क्योंकि न्यूट्रॉन्स की वजह से क्लास मास वेरी करता है तो इस वजह से आपका मास नंबर भी वेरी करेगा. बट सेम प्रोटॉन नंबर्स, राइट? अब क्लास इसकी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा. एग्जांपल इज ऑफ क्लोरीन. So class chlorine has basically two isotopes. I'll write down their abundance as well. Okay. Isotope 1 and we have isotope 2. Fine. One is chlorine
35 and the other one is chlorine 37, and the percentage of chlorine 35 is 75%, whereas the percentage of chlorine 37 is 25%. Okay. So how can we find the relative atomic mass? I'll tell you a formula. It's a very easy formula for relative atomic mass. It is denoted by the symbol AR. Okay. So first of all, class, what we will do is we will multiply the mass number with its percentage. For example, chlorine 35 has a percentage of 75%. I will multiply by its percentage, 75, and then do the addition, and then I will simply multiply 37 by its percentage, and I will get 25, and I will multiply it by 25 because it has a percentage of 25%. And if we add them together, 75 plus 25, I will get 100. So I will write over here 100, and then I will do the calculation in front of you. Okay. Now I have brought the calculator finally. So what I will do, I will first put the brackets and do the calculation in front of you. As you can see, 35 into 75, brackets close, and then again I will do the other part, 37 into 25 divided by 100, and I will get the final answer as 35.5. इस तरह हमें ये 35.5 मिल जाता है। और हम periodic टेबल से भी चेक कर सकते हैं। ये देखें, periodic टेबल में अगर हम देखें तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, 35.5। इस तरह periodic टेबल में हमें एवरेज masses मिलते हैं। This is the reason how we get the average masses in the periodic table. There is another way also to solve this. Since we have been provided by the number of percentages, जैसे मैं आपके सामने इसकी simplified एक ratio लिख लेता हूँ, जिसकी हेल्प से हम एक simplified ratio obtain हो सकती है। जैसे क्लोरीन 35 है, क्लोरीन 37 है, इसकी रेशियो है 75, 75% है इसकी, और इसकी है 25% है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो वी विल गेट 3:1। हम इस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द रिलेटिव एटॉमिक मास AR। विल मल्टीप्लाई 35 by 3 and 37 by 1, and 3 plus 4 is equal to 3 plus 1 equals to 4 if we add 3 plus 1. So we will divide by the total number 4 and again do the calculation. Okay. 35 into 3 plus 37 multiplied by 1 divided by 4. And again, we are getting the same answer. In this way, we get
the final answer as 35.5 AMU। यानी कि periodic टेबल में जितने भी आपके पास मैसेज गिवन है वो सारे एवरेज मैसेज हैं, आइसोटोप्स का एवरेज मास यूज किया गया है, relative atomic mass। ओके क्लास नाउ आई विल गोइंग टू टीच यू, और ये हमें मैथ्स कैसे मिलते हैं, एक डिवाइस होती है मैथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। थ्रू स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आई विल राइट डाउन इट्स नेम फॉर यू। विद द हेल्प ऑफ मैथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर you can easily find the relative abundance of these isotopes, जिसकी वजह से हमें relative atomic mass easily अपने हम कर सकते हैं calculations। ठीक है। Okay class, now I will teach you how to find the relative molecular masses of these compounds। Okay, relative molecular masses, it is denoted by MR। जैसे पहले हम क्लास relative atomic masses की बात कर रहे थे, जब यही एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं जॉइन करके, so they form molecules। तो relative molecular masses किस तरह फाइंड करते हैं एटम्स का, हम relative atomic masses एड अप कर देते हैं एलिमेंट्स का सारा। इस so due to this we are able to find the relative molecular mass of these compounds। I will write down its definition for you। It is the sum of all the relative atomic masses of different elements present in one molecule of a compound is called its relative molecular mass। और इसका सिंबल क्लास होता है MR। अब class now I'll try to explain you through different examples। For example, we will start with water, since water is the easiest example and all of you know its chemical formula, it's H2O। ओके मैं आपके लिए MR बस लिख रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। अच्छा खास जैसे बताए वाटर, इसका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का वो कितना है, मैं आपको प्रोडक्ट टेबल दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें आप, इट्स 1। ओके इट्स 1। So what I will do is, since we have two atoms of hydrogen, I will multiply by 2 by 1, and then I will add the relative atomic mass of oxygen. We'll check it from the periodic table. It is 16. I'll simply add 16 and let's check what answer we get. It's 18. Fine. Now I will do the example of sulfuric acid, that is sulfuric acid, and its chemical formula is H2S. Yes. Okay, let's find the MR of sulfuric acid. Since you know that the relative atomic mass of hydrogen is
1, so we'll multiply by 2 by 1. The हम इसका ऐड करेंगे मैथ सल्फर का करेंगे प्रोडक्ट टेबल से। सल्फर का कितना है 32, यस। We'll add 32 to it, and then we have 4 oxygen. Oxygen का कितना है? Let's check again from the periodic table. It's 16. Yes. 4 multiplied by 16. Let's check what we get. Yes, we get the relative molecular mass of sulfuric acid as 98. इसका 98 mR है. Next example, we have urea. It will be NH2 bracket closed, then again 2. Then we have CO. Okay. इसका हम अब MR कैसे फाइंड करेंगे? अच्छा, 2 मल्टीप्लाइज बाय नाइट्रोजन, अब 2 नाइट्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगेन देयर आर 2 हाइड्रोजन इनसाइड द ब्रैकेट, सो 2 by 2 becomes 4. सो व्हाट वी विल डू, हमें पता है जैसे 2 नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का सिंगल एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 14. 14 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 4 मल्टीप्लाई बाय 1. कार्बन का कितना होता है क्लास? लेट्स चेक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल. इट इज 12. ओके. और ऑक्सीजन का लास्ट, जैसे हमने लास्टली चेक किया है, 16 होता है. So we are getting the MR of urea as 60. Okay. Now we'll do an example of sodium hydroxide. As its formula is NaOH. Okay. MR. इसका MR हम फाइंड करेंगे. सोडियम का जैसे हम प्रोडक्ट टेबल से देखते हैं अगेन, 23, और ऑक्सीजन का 16. We'll add 23 plus 16 plus 1. Let's check what we get. 40. So the MR of sodium hydroxide is 40. Limestone. लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है क्लास कैल्शियम कार्बोनेट. इसका एमआर हम कैसे फाइंड करेंगे? कैल्शियम का क्लास फिर अगेन हम प्रोडक्ट टेबल से चेक करते हैं. कैल्शियम का एआर होता है 40. 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, सिंस देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3. लेट्स चेक व्हाट वी गेट 100. So class, in this way we can find the relative molecular mass of compounds. अब एक हम आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल भी कर लेते हैं, लाइक NaCl. ये सारी कोवलेंट की थी. सोडियम क्लोराइड NaCl. MR इज इक्वल टू, सोडियम का कितना होता है क्लास मैस? 23, और इसका होता है 35.5. ओके.
Let's try this. 23 plus 35.5. Let's check what we get. It's 58.5. In this way, we can easily find the relative molecular masses of different compounds from the relative atomic mass of the elements, right? So I hope all of you have understood the video. Thanks for your attention. Allah Hafiz.